back to my YouTube channel. Welcome back to another video. I hope you all are doing amazing. So if you guys are seeing me for the very first time and do not know me, hi, I am Meghal and I make videos related to hair, makeup, nails and skincare. So don't forget to subscribe to my YouTube channel, watch my previous videos if you haven't, and follow me on Instagram. And let's get started with today's video. This is the star product of today's video. This is a brush set from a brand called DUcare. एंड ये इसी बॉक्स में आता है. दिस इज़ लाइक अ कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग एंड इसके अंदर ब्रशेज़ हैं. सो दिस ब्रश सेट रिटेल्स फॉर ₹3500 एंड इसमें 17 ब्रशेज़ हैं. एंड यू नो एवरीथिंग इज़ मैंशनड ऑन द बॉक्स. यहाँ पे हर ब्रश का नाम मैंशनड है एंड एवरीथिंग इज़ रिटन हियर. एंड दीज आर सिंथेटिक फाइबर ब्रशेज़ एंड दे हैव ए प्लास्टिक हैंडल. ये देखने में बहुत ही प्रीमियम लगते हैं. दे लुक रियली गॉर्जियस एंड प्रिटी एंड मतलब मुझे ये ब्रशेज़ बहुत अच्छे लगे. एंड यू नो इफ़ यू आर यूजिंग दीज, आप प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हो या अपने सेल्फ के लिए यूज़ कर रहे हो, यू आर नॉट मिसिंग आउट एनी थिंग. Because I have seen a lot of influencers and makeup artists using, you know, brushes from specific brands which I know are really expensive. And आप उनमें से 2-3 brushes भी purchase कर लो is fine instead of investing into the entire set, because I know कि वो काफ़ी ज़्यादा expensive होते हैं. And I feel brushes के साथ तो ऐसा होता है कि जितने खरीदो उतने कम होते हैं. So earlier I used to have like 15-20 brushes and वो कम थे. Then I got more and more and now I think I have more than 100-150 brushes, but अभी भी मुझे वो कम ही लगते हैं. So for somebody like me, क्योंकि you know when we are into makeup and stuff, ये चीज़ें तो आप endless purchase कर सकते हो. So when you are purchasing these things regularly, it's very difficult कि आप 10-12 हज़ार रुपये एक brush set पे you know खर्च कर दो. So this definitely comes in handy because it is affordable, it fits into your range and the quality is amazing. It's not कि सस्ता ख़रीदा तो quality बेकार है या कुछ, या variety नहीं है या brushes अच्छे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. They look premium, they work amazing and everything is nice. So now let's unbox. So because मैं इसको 2-3 बार खोल चुकी हूँ, so it's not in the best condition. जैसे ये आया था ये वैसा तो नहीं है, but a few brushes are still packed and intact जैसे वो थे. So every brush comes in this plastic sort of packaging and हर ब्रश के ऊपर, ऑलमोस्ट सब ब्रशेस के ऊपर यू नो ये फिश नेट वाला भी लगा हुआ है प्लास्टिक, टू यू नो प्रिवेंट योर ब्रशेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज एंड स्टफ. इसकी जो ब्रिसल्स है वो इधर उधर फैले ना, इट स्टेज इन प्लेस. उसके लिए ऑलमोस्ट सब ब्रशेस पे दे ही रखा है. एंड दिस इज़ हाउ द ब्रश लुक्स लाइक. This is like a silver and purplish sort of ombre effect going on and it looks so premium, so rich. मतलब इसको देख के लग नहीं रहा कि सस्ती रेंज वाला है. And the bristles are so soft and easy to work with. So I really like this. These are the brushes. These are in totality 17 brushes. And speaking about the variety, इसमें आपको फाउंडेशन ब्रश मिलेगा, कॉन्टोर ब्रश मिलेगा, ब्लश ब्रश मिलेगा. You know, you will get flat brushes, eyeshadow brushes, small and big. You will get a spoolie, an angular brush, everything you need for your makeup. And अगर आप इस एक सेट में इन्वेस्ट करते हो, you don't need to purchase you know different brushes for different purposes, because इसमें सारा you know पूरा full faces makeup के लिए जितना भी आपको सामान required है, everything comes in this set. So absolutely love this. So these are what the brushes look like. बहुत ही you know सुंदर है, बहुत ही amazing quality है इनकी. तो अगर हम बड़े brushes की बात करें, there are these 5 big brushes which come in this kit. So number 1 is this flat brush. This is a basically foundation brush है, and I have made a full-fledged video using this brush on my face and I've reviewed the Maybelline and Wet n Wild foundation, so check it out if you haven't. And इसकी application is so amazing. I can't you know जितनी तारीफ कर लूँ मैं इसकी उतनी कम है. And absolutely love this. And brush से क्या होता है, basically आपकी जो application होती है वो बहुत even होती है and ज़्यादा coverage होती है as compared to using a blender, because जो हमारे beauty blenders होते हैं वो absorb कर लेते हैं product, but ये बिल्कुल absorb नहीं करता. And these are synthetic bristles, so that is a plus point and absolutely love this one. Then we have these 2 angular brushes. These are basically for contouring and bronzing purpose.
आप इसको कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो. वन इज़ स्मॉल, वन इज़ बिग, एंड अगेन एब्सोल्युटली लव दिस. मैं यूजुअली हाइलाइटर लगाने के लिए ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ. आई थिंक इट्स ऑफ द परफेक्ट साइज़ एंड शेप. तो अगर मुझे इसे हाईलाइटिंग करनी होती तो मैं इससे कर लेती हूँ. Absolutely love this again. Then we have these two brushes. One is the powder brush, another one is the blush brush. तो यूजुअली मैं पाउडर तो इसी से सेट करती हूँ एंड ब्लश तो नहीं लगाती मैं इससे. बट मैं अगेन हाइलाइटर अगर मुझे यूज़ करना होता है तो मैं इसी से यूज़ करती हूँ. या फिर when I have to set loose powder for the under eyes and stuff, because this is a bit bigger, मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर लेती हूँ. so it really comes in handy and everything is amazing. Now we have these 12 smaller brushes. इसमें एक spoolie आती है. ठीक है, these are the blending brushes for your eye shadows and flat brushes भी है इसमें, you know. This brush specifically I really like for, you know, under eyes पे concealer लगाने के लिए and stuff. I think it's of the perfect shape and size. तो under eyes में concealing करने के लिए, you know, color corrector use करने के लिए, you know, because beauty blenders कई बारी ढंग से they don't work. So I think this brush again comes in handy, and my most favorite brush is this one. एंड ये सारे ब्रशेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है. इनका फॉल आउट नहीं था, मतलब इट्स नॉट कि बाल निकल रहे हैं, इसके ब्रिसल्स निकल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड ईच वन ऑफ दीज ब्रशेस परफॉर्म्स अमेजिंगली एंड एब्सोल्युटली लव दिस ब्रश सेट. व्हाट हैपेंस इज, जब हम अपना मेकअप करते हैं ना, पीपल आर लाइक ये वाला ब्रश इज मेंट फॉर दिस पर्पज, तो हम उसको उसी के लिए यूज़ करेंगे. बट व्हेन आई एम वर्किंग आई डोंट रियली, यू नो, सी कि कौन सा ब्रश किस पर्पज़ के लिए. मुझे जो जिस काम के लिए ऐप लगता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ. सो इट्स नॉट कि अगर ब्लश ब्रश है तो मैं उसको ब्लश के लिए यूज़ करूँगी, किसी और के लिए यूज़ नहीं करूँगी. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड हाउ यू वर्क. आपको जो सूटेबल लगे, जिस भी पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो. एंड इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल कि कॉन्टोर ब्रश कॉन्टोर के लिए ही यूज़ करना है, या फिर आई ब्रश इसी के लिए यूज़ करना है, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है. whatever suits you and works best for you, आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हो. And I'm gonna do like a basic makeup sort of and use these brushes ताकि आपको साथ साथ समझ आता रहे how I do it and how is the application. And yeah, now let's study about the brush itself first. So this is my brush. Now ये जो इसका top part है जहाँ पे इसके hair निकल रहे हैं, these are the bristles of my brush. And ये जो पीछे वाला part है, this is the handle of my brush. And in between जहाँ पे मेरे bristles and handle are connecting is called the bridge. So basically how you have to use a brush is, I've seen people hold it like this from the back. Now what happens जब आप इतना पीछे से या इतना दूर से आप पकड़ते हो, what happens is when you're working, suppose you're working like this, तो ना आपकी grip नहीं बन पाती उतनी अच्छी. Okay, so I've also seen people holding brushes like this, जैसे आप एक पेन पकड़ते हो like this. Now what happens when you're working like this is कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हो. For example, you're working on your eye and आपने आई शेडो पिक करी. Now instead of the correct amount of eye shadow, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाएगा because you are holding it from the front like this. तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं हमें चाहिए, हमें बहुत कम भी नहीं चाहिए कि ग्रिप ही ना बने हमारी. We want it to be of the perfect amount. So what we do is we hold the brush somewhere from here. This is जहाँ पे हमारा ब्रिज ख़त्म हो रहा है. लाइक समवेयर फ्रॉम हियर आपको ब्रश पकड़ना होता है अपना, एंड देन आपको ऐसे से काम करना होता है. नाउ अगेन देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कैसे काम करना है या कैसे नहीं करना. दिस इज जस्ट द बेसिक कि आपको कैसे ग्रिप बनानी है अपनी, एंड यू नो हाउ यू हैव टू वर्क. बट इफ़ you know holding it from the back works best for you, आप ऐसा भी कर सकते हो, because at the end of the day what we're doing is something creative. So there are no rules in makeup कि ऐसे करो या वैसे करो या ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. whatever works best for you, do it. And now let's get started with the application. So before starting my makeup I'm going to use this is the natural wash rose water. Absolutely love this. इसको आप पूरे दिन में कभी भी यूज़ कर सकते हो, before your makeup, after your makeup, in between your makeup उतारने के लिए, कुछ भी, whatever, you know. Absolutely love this, and it gives my skin such a refreshed look. And because अभी बहुत गर्मी है, so I think this is a must, and I'm just gonna spray it a bit on my face. Today's video I am just going to do a very basic makeup because I have to go out, and I don't want, you know, a heavy base because actually में बहुत गर्मी है बाहर,
and I don't want it to be cakey or heavy. I want it to be, you know, subtle and natural. So I'm just going to use this concealer. This is from Inside Cosmetics and this is shade NC1, and I'm going to use this brush right here, and I'm just going to take a bit of product and apply it on my under eyes and places where I have pigmentation like my acne. Now you see it for yourself कि कितनी अच्छी application हो रही है. Reason being, इसका जो size है is very appropriate for working under eyes, and it works really well. Moving on to the bronzer, I'm going to use this contour palette from NYX Cosmetics, and I'm going to use this shade with my big contour brush. With this big blush brush, I'm going to use this pink shade right here and apply it on my cheeks. Now I'm going to use this loose powder from Swiss Beauty, and I'm going to take this small brush which was supposed to be used for the blush part. I'm going to use this for setting my under eyes and the rest of my face. Using this bronzer brush, I'm going to apply my highlighter, and again I'm using the same palette. I'm going to use this golden shade right here and apply it on the high points of my face. Using this spoolie and angular brush, I'm going to quickly do my brows. I'm going to use this Swiss Beauty eyeshadow palette and do my eye makeup using these two brushes. One is a small blending brush and the other one is a flat brush. And I'm going to use this blending brush first and take this brown shade here, tap off the excess and do my outer corners. My shade right here on my flat brush and apply it on the inner corner. So far so good. I absolutely love how my makeup has turned out to be, and these brushes again are of amazing quality. So don't think twice before investing into these ones. And lastly, I'm going to use this Nykaa Seal It With The Kiss lip palette and take this small lip brush and do my lipstick. Okay, and I am done with today's makeup video, and I hope it was helpful, and this was my 100% honest review of this brush set. And again, without thinking twice, आप definitely इसमें invest कर सकते हो because all the brushes are amazing. And for 3500 rupees, अगर आपको 17 brushes मिल रहे हैं, like 200 per brush is again a steal deal. Usually अगर आप अच्छे brands के brushes purchase करते हो तो आपको I think 500-600 से starting price range में brushes मिलते हैं, you know, going till 800 and 1000 rupees, and यहाँ पे आपको 200 rupees per brush की cost पड़ती है, which is amazing. And with one set you get everything from eyes to lips to face, आपको सब कुछ मिलता है. So it is absolutely amazing, and I hope this video was helpful. And drop in a comment, like this video, share this video with your friends, and subscribe to my YouTube channel if you haven't. And I will see you guys next time. Till then, take care. Bye bye.